नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन हब एमएच में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एप्रिसिएशन ऑफ पोयम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट पोयम के एप्रिसिएशन हम आज देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नोट है। देयर विल बी फिक्स्ड क्वेश्चन ऑन द एप्रिसिएशन ऑफ पोयम इन 12th बोर्ड एग्जाम, यानी कि 12th बोर्ड एग्जाम में फाइनल अगले साल होने वाली है, उसमें एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम ये क्वेश्चन फिक्स पूछा जाएगा। जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे तब 10 मार्क्स का क्वेश्चन एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम पर पूछा गया था। तो अभी एप्रिसिएशन ऑफ पोयम आपको क्वेश्चन दिया है तो वो 12th की फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में वो आगे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आगे के पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं एप्रिसिएशन के। फर्स्ट पॉइंट है अबाउट द पोयम। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड is an inspirational poem written in the form of narration. This poem is an ode to oneself, which is the part of leaves of grass. दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट द पोएट। द पोएम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, was an American poet, essayist, and journalist. Whitman is often called the father of free verse. Next point about the title. The title of the poem is Song of the Open Road. The title of the poem is key to the journal meaning and summary of the thought presented. The title is also indicates the freedom. Next point is theme. Mainly, the poem deals with freedom, optimism, and the joy of free life. The poem is highly inspirational and it encourages the readers to be turned to themselves and live and enjoy the freedom of life. Next point is language and poetic device. The poem is written in very simple and effective language. As it is written in free verse, there is no rhyme scheme. Length of line and stanza pattern are not equal. Phrases like light-hearted is interesting. There are many poetic devices are used in this poem as follows: metaphor, second paradox, third one is free verse, and fourth one is repetition. The next point is spatial features. Spatial feature of the poem is its first person narration I, which represents every individual. The poet has used the spatial device of parenthesis by putting last stanza in bracket to separate himself from the worldly needs. It also shows that there is a meaningful relationship between him and his delicious burden. The next point is moral. The poem teaches us to be happy and optimistic as we have everything, including freedom and an ample of opportunities. And then next point is opinion. It is the last point. My opinion about the poem is that poem is nice because it encourages us to enjoy the life in healthy and free world. It motivates me to feel the hurt with immense pleasure of life journey. I really like the poem. दोस्तों, ये जो लास्ट ओपिनियन का पॉइंट है उसमें आप खुद के भी ओपिनियन डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. Please subscribe to our channel to get
more and more appreciation of poems, and 12 standards all updates and exercises, and also the important videos you get on our channel. धन्यवाद दोस्तों. Again, please subscribe our channel to get all notifications, and please share this video with your friends. धन्यवाद.